गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है यूजीसी कमेटी ऑन न्यू कॉलेज डिग्रीज। तो ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। यूजीसी जो है प्लान कर रहे हैं कि न्यू कॉलेज डिग्री नेम जो है वो दिए जाएं जो कि ग्लोबल नॉर्म्स के साथ अलाइन हो। ऐसा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी कहती है। तो अब होने क्या वाला है कि बैचलर ऑफ साइंस की डिग्रीज मिला करेंगी आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़, मैनेजमेंट और कॉमर्स फील्ड्स में। तो अभी तक क्या होता है कि या तो आपको जैसे बैचलर ऑफ आर्ट्स इन मिलता है या फिर बीए की डिग्रीज़ मिलती हैं मैनेजमेंट में या कॉमर्स में। तो लेकिन ग्लोबल नॉर्म्स क्या कहते हैं कि बीएससी की डिग्री, बैचलर ऑफ साइंस की डिग्रीज़ भी जो है वो इन फील्ड्स में दी जा सकती हैं। तो एक तरह से रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज़ के प्रोग्राम को। न्यू 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट ऑनर्स जो है प्रोग्राम लाया जाने का जो है प्लान है। और सिमिलर जो है वो मेथड से मास्टर ऑफ साइंस मतलब कि जो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज हैं वो भी लाने का प्लान किया जा रहा है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं ऑफ कोर्स वर्ल्ड में, जैसे कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटीज़, जो बीए और बीएस जो है बैचलर ऑफ साइंस दोनों की डिग्रीज देती हैं इंजीनियरिंग साइंसेज में, ताकि मोर होलिस्टिक एजुकेशन जो है वो ऑफर की जा सके। अब और क्या कमेटी ने रिकमेंडेशंस दी हैं, उन्होंने कहा है कि ऑनर्स की डिग्री जो है वो दिया जानी चाहिए, जैसे बीए ऑनर्स, बीकॉम ऑनर्स, बीएस ऑनर्स, और एमफिल की डिग्री को उन्होंने डिसकंटिन्यू करने का जो है वो सजेस्ट किया है। अगर किसी स्टूडेंट ने जितने भी रिक्वायर्ड क्रेडिट्स होते हैं वो प्रोग्राम के ख़त्म होने से पहले ही कंप्लीट कर लिए हैं या अर्न कर लिए हैं, तो उसको ज़बरदस्ती जो है पूरा जो है प्रोग्राम की ड्यूरेशन में बिठाने की ज़रूरत नहीं है। उसको कंप्लीशन से पहले उसको कंप्लीशन से पहले भी जो है वो क्वालिफिकेशन दी जा सकती है, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या डिग्री। ठीक है, सो अब हम देखते हैं यूजीसी क्या है। यूजीसी जो है वो 1944 में सार्जेंट रिपोर्ट आई थी, पहला अटैम्प्ट तब में किया गया था नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन बनाने के लिए। उसी के बेसिस पर जो है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमेटी बनाई गई 1945 में, जो कि 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ अलीगढ़, बनारस और दिल्ली को जो है वो ओवरसी करती थी। उसके बाद जब इंडिपेंडेंस हुआ तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन बनाया गया 1948 में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी। और इन्होंने ही जो है वो प्रपोज़ किया कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमेटी बनाई जानी चाहिए, जैसे यूके में है। ठीक है, विद द फुल टाइम चेयरमैन और अदर मेंबर्स। फिर 1953 में जाकर मौलाना अबुल कलाम जो है वो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर थे, उन्होंने जो है इसको लॉन्च किया और स्टेचुटरी बॉडी बनाया गया इसको 1956 में। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ग्राउंड लेवल ओजोन। इन्वायरमेंट के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट के मुताबिक दिल्ली एनसीआर रीजन में ग्राउंड लेवल ओजोन रीडिंग्स जो है वो सेफ स्टैंडर्ड से एक्सीड हो चुकी हैं, और मार्च और मई का जो पीरियड है उसमें ये एक्सीड हुई हैं। अब ग्राउंड लेवल ओजोन क्या है? जैसे ट्रोपोस्फेरिक ओजोन होती है उसी को ही हम जो है वो ग्राउंड लेवल ओजोन कहते हैं। कलरलेस और हाईली इरिटेटिंग गैस है, अर्थ के जस्ट अबव होती है ये। एक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है, डायरेक्टली एमिट तो नहीं होती एयर में, लेकिन प्रोड्यूस होती है जब 2 प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स जो है वो सनलाइट और स्टेगनेंट एयर में रिएक्ट होते हैं। कौन से ऐसे प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स होते हैं? नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये नेचुरल सोर्सेज से भी आते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ से भी आ सकते हैं, बर्निंग ऑफ कोल से, गैसोलीन से, ऑयल से, इनसे जनरली जो है ये 95% ऑफ दीज पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं। और अगर ये सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को ब्रीच कर दें तो ऑफ कोर्स ये अनहेल्दी लेवल्स जो है वो रीच कर जाते हैं, और जो है इसकी वजह से जो है हेल्थ इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं। क्या हेल्थ इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं? अगर हम जैसे ग्राउंड लेवल ओजोन को देखें तो एक हाईली रिएक्टिव गैस है, इससे रेस्पिरेटरी कंडीशंस जो है वो देखने को मिलती हैं, और ये एयरवेज को डैमेज कर सकते हैं। एक सीरियस पब्लिक हेल्थ इशू बनता जा रहा है ये। और अगर हम देखें पिछले कुछ सालों में 2010 से 2017 के बीच में, तो सबसे ज़्यादा जो है वो इंक्रीज़ देखने को मिला है ग्राउंड लेवल ओजोन में। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं केरला ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। केरला गवर्नमेंट ने ऑफिशियली लॉन्च किया है केरला फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क को, ताकि डिजिटल डिवाइड जो है स्टेट में कम किया जा सके। बेसिकली ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर होंगे, और ये ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क जो है 30,000 किलोमीटर्स का बनाने वाले हैं, जिसको सर्विस प्रोवाइडर्स इंक्लूडिंग प्राइवेट केबल ऑपरेटर्स उनके साथ भी ये इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर किया जाएगा। तो अभी जो है जो के एफ ओ एन
कैफॉन होगा जो, वो केबल नेटवर्क गवर्नमेंट ऑफिसेज़ के लिए देगा, लेकिन अगर लोगों को चाहिए उसके लिए जो है प्राइवेट पार्टीज़ या फिर प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर्स या लोकल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स वो जो है वो ये इंटरनेट या फिर जो है बैंडविड्थ की जो है सर्विसेज पहुंचाएंगे। इसमें 10 Mbps से लेकर 10 Gbps तक का जो है वो इंटरनेट स्पीड दी जा सकेगी, और इसको मोबाइल टावर्स के साथ भी कनेक्ट किया जाएगा ताकि 4G से जो है 5G का ट्रांजिशन स्मूथ किया जा सके। और यूनिवर्सल इंटरनेट एक्सेस देने का जो है ये प्रोजेक्ट है बेसिकली, और जॉइंट वेंचर है ये केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और केरला स्टेट IIT इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का। और इसको इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? सेंट्रल PSU भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। फुली फंडेड है केरला इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड के द्वारा, और इसमें जो है ये भी प्रोग्राम रखा गया है कि 20 लाख बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज़ को जो है फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेट कनेक्शंस भी दिए जाएंगे। अब क्यों ज़रूरत पड़ी इसकी? क्योंकि अभी जो हमारा टेलीकॉम सेक्टर है वो प्राइवेट प्लेयर्स द्वारा डोमिनेटेड है, और वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर रूरल एरियाज़ में नहीं बनाते हैं क्योंकि वहाँ पे उनको प्रॉफिटेबिलिटी नहीं दिखती है। तो वायरलेस कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो सिर्फ अभी लिमिटेड बैंडविड्थ का ही अवेलेबल है। इसके लिए जो है प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर्स अपना इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो है वो स्पेंडिंग नहीं कर रहे हैं, तो क्योंकि उनको वहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी नहीं दिखती है। तो इसीलिए जो है केरला जो है अब इस फील्ड में सामने आए हैं, और उन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का अपग्रेड करने का सोचा है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं बाघ प्रिंट। आर्ट एंड कल्चर के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड जो है उन्होंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन धार के साथ रिसेंटली मिलकर एक ट्रेनिंग कैंप ऑर्गेनाइज किया है ताकि सस्टेनेबल बैग्स जो है वो मैन्युफैक्चर किए जा सकें ऑन बाघ प्रिंट। ठीक है, तो बाघ प्रिंट क्या है? तो बेसिकली ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्निक का नाम है बाघ प्रिंट, जो कि स्मॉल विलेज बाघ मध्य प्रदेश में वहाँ पर जो है ये प्रैक्टिस किया जाता है, और बाघिनी रिवर के ऊपर इसका नाम रखा गया है। मुस्लिम कम्युनिटी के जो मुस्लिम खत्रीज जो हैं 1962 में उन्होंने जो है ये इसको स्टार्ट किया था, और वीविंग और हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग प्रोसेस होता है इसमें, जिसमें ज्योमेट्रिक डिज़ाइंस जो है वो फॉलो किए जाते हैं। अगर हम इसके फीचर्स देखें तो क्लॉथ यूज़ किया जाता है, कॉटन और सिल्क क्लॉथ, और नेचुरल डाइज जो है के थ्रू इसको क्रिएट किया जाता है, जो कि इको फ्रेंडली और नॉन हजार्डस हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन। ये टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल रिज़र्व पुलिस फोर्स ने जो है सेंट्रल रिज़र्व पुलिस फोर्स जो है वो कंसिडर कर रही है कि जो है एलीट एंटी नक्सल यूनिट कोबरा की ट्रेनिंग को जो है वो दोबारा जो है चेंज किया जाए। तो ये कोबरा जो है ये गरिल्ला या जंगल वॉरफेयर टाइप ऑपरेशंस के लिए इसको रेज़ किया गया था। इसके जो पर्सोनल होते हैं वो CRPF से ही लिए जाते हैं। रिगरस कमांडो और जंगल वॉरफेयर ट्रेनिंग के लिए वो जाते हैं, और लगभग 10 कोबरा यूनिट्स जो हैं वो 2008 और 2011 के बीच में रेज़ किए गए हैं। CRPF तो आपको पता है एक प्रीमियर सेंट्रल पुलिस फोर्स है यूनियन गवर्नमेंट की, होम मिनिस्ट्री की अथॉरिटी के अंदर आती है। इसको इनिशियली तो 1939 में क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस की तरह से जो है वो कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, ताकि जो नेटिव स्टेट्स थी इंडिया में उनको लॉ एंड ऑर्डर प्रिजर्व करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट हेल्प करती थी। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ तो CRPF एक्ट पास किया गया 1949 में, और इसको एक जो है वो यूनियन की फोर्स बना दिया गया। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए ही इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ पावर और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने जो है वो जॉइंटली एक मिशन लॉन्च किया है, नेशनल मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च। तो बेसिकली ये मिशन हेल्प करेगा इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ को जो है वो आइडेंटिफाई करने में पावर सेक्टर में, और उसको इंडिजिनसली डेवलप भी करेगा ऑफकोर्स, ताकि उसको विद इन और आउटसाइड इंडिया जो है वो कैसे हम जो है वो डेवलप कर सकते हैं। इसकी फंडिंग जो है पूरी मिनिस्ट्री ऑफ पावर और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी अलॉन्ग विद सब सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज जो है वो जो इन्हीं मिनिस्ट्रीज़ के अंडर हैं वो फंडिंग करेंगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कभी अगर ज़रूरत पड़ी तो उधर से भी बजटरी रिसोर्सेज लिया जाएंगे। अगले 5 साल के लिए मिशन प्लान किया गया है। इसके लिए एक स्ट्रक्चर भी बनाया गया है जिसमें कि टेक्निकल स्कोपिंग कमेटी होंगी, जिसमें चेयरपर्सन होंगे जो है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के जो है चेयरपर्सन, वो इसको चेयर करेंगे। फिर एक एपेक्स कमेटी भी बनाई जा रही है जिसमें कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर भी जो है वो इसको हेड करेंगे। अब कौन से एरियाज़ पर रिसर्च की जाएगी? लिथियम आयन स्टोरेज बैटरीज, इलेक्ट्रिक कुकर्स या पैन्स, ग्रीन हाइड्रोजन, कार्बन कैप्चरिंग एट्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं फूड सेफ्टी इंडेक्स। ये टॉपिक भी आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने 5th स्टेट
फूड सेफ्टी इंडेक्स न्यू दिल्ली में लॉन्च किया है। ये एक एनुअल असेसमेंट होती है जो कि FSSAI जो है आपके असेसमेंट करके देता है, और 2018-19 से जो है ये स्टार्ट किया गया था। और इसमें परफॉर्मेंस देखी जाती है स्टेट या यूटी की 5 सिग्निफिकेंट पैरामीटर्स पर, जो कि हैं ह्यूमन रिसोर्स एंड इंस्टीट्यूशनल डेटा, कंप्लायंस, फूड टेस्टिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्वेलेंस, ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग और कंज्यूमर एम्पावरमेंट। तो ये इंडेक्स जो है एक डायनामिक क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव बेंचमार्किंग मॉडल बनता जा रहा है, जिससे कि फूड सेफ्टी अक्रॉस द स्टेट्स और यूटीज़ को इवेल्युएट किया जा सकता है। लार्ज स्टेट कैटेगरी में केरला टॉप परफॉर्मिंग स्टेट है, फॉलोड बाय पंजाब एंड तमिलनाडु। स्मॉल स्टेट कैटेगरी में गोवा टॉप रैंकिंग स्टेट है, और अगर यूनियन टेरिटरीज़ में देखें तो जम्मू एंड कश्मीर, चंडीगढ़ और दिल्ली जो है वो टॉप रैंकिंग जो है वो यूटीज़ हैं। So now let us see all these topics in English. So the first topic is UGC Committee on New College Degrees. This topic is important for your governance section. UGC is planning to introduce new college degree names which are aligned with global norms and National Education Policy 2020. So now these degrees will include Bachelor of Science in the fields like Arts, Humanities, Management and Commerce. So currently UGC permits universities to offer a Bachelor of Arts degrees in these fields, but now the global norm has become that Bachelor of Science degrees are given for these subjects. But in India, we are generally giving these Bachelor of Science degrees for science subjects only. Okay, so there is a need for restructuring of our undergraduate and postgraduate degrees. So the committee is recommending that new 4-year undergraduate honors programs can also be introduced. Universities can adopt also the Master of Science nomenclature for the similar subjects, and this program curriculum will also be modified to set the BA degree apart from the Bachelor of Science degree. Okay, so what are other recommendations made by this committee? So this committee is saying that we can include honors in brackets for degrees like BA honors, BCom honors, and BS honors or Bachelor of Science honors, and they are also recommending discontinuation of nomenclature of MPhil degree. So if a student has cleared all the or if a student has earned all the required credits, then he or she shall be considered for the award of a qualification even before the completion of that degree or certificate or diploma. Okay, so what is UGC? It was the first attempt to transform national system of education in India was made in 1944. So Sargent report made this recommendation that a university grants commission the University Grants Committee shall be formed, which was actually established in 1945 to oversee the work of 3 central universities of Aligarh, Banaras and Delhi. And after independence, University Education Commission was formed in 1948 under the chairmanship of Dr. S. Radhakrishnan. So University Grants Commission, this committee, this commission actually recommended that we should form a University Grants Committee on the lines of UGC of the UK at that time. So in 1953, the then Minister of Education, Maulana Abul Kalam Azad, formally launched this UGC, and it was given a statutory status in November 1956. So the next topic is ground level ozone. This topic is important for your environment section. So as per the Center for Science and Environment, parts of Delhi NCR region is witnessing ground level ozone readings which is exceeding the safe standards, especially between the months of March and May. So what is ground level ozone? It is a tropospheric ozone, which is a colorless and highly irritating gas which forms just above Earth's surface. And it's a secondary pollutant. It is not directly emitted into the air, but it is produced when 2 primary pollutants react in sunlight and stagnant air. So these 2 primary pollutants are nitrogen oxides and volatile organic compounds. So they come from natural sources as well as the human activities. So generally burning of coal, gasoline, oil, etc. emit 95% of these pollutants, and they can breach safety standards on hot summer days, and they can also reach unhealthy levels during the colder months. So these pollutants also travel long distances due to wind and affect rural areas. So what are the harmful effects of it? So of course it's a highly reactive gas. It can lead to health consequences for respiratory
or it can create respiratory problems like inflammation and damage of the airways. Okay, so it has become a serious public health issue in India, especially between the periods of 2010 and 2017, when there has been when we saw the highest increase of 17% in India between this period. Okay. So the next topic is Kerala Optical Fiber Network. This topic is important for your governance and your science and tech section. Kerala government has officially launched the Kerala Optical Fiber Network to reduce the digital divide by ensuring high-speed broadband internet access to all houses and government offices. So KFON will act as an infrastructure provider, and it will build an optical fiber cable network of 30,000 kilometers, which will be shared with all service providers, including the cable operators. So KFON will also do the cable work for government offices, but the internet service providing task will be done by the individual internet service providers for individual beneficiaries. So it promises an internet speed from about 10 Mbps to 10 Gbps, and it will also be connected to mobile towers so that transition from 4G to 5G can be made. And it will create the core infrastructure or core network infrastructure with non-discriminatory access to all, which will be provided to all service providers. It's a joint venture between Kerala State Electricity Board and Kerala State IIT Infrastructure Limited, and this will be implemented by a consortium led by Central PSU Bharat Electronics Limited. It will be fully funded by Kerala Infrastructure Investment Fund Board, and internet connections would also be provided to 20 lakh below poverty line beneficiaries under this KFON scheme. So what was the need of it? So currently the entire telecom sector is dominated by private players who are not very keen to invest in rural areas due to profitability issues. So that's why wireless connectivity infrastructure is limited, is with limited bandwidth in such areas. That's why this has been envisioned. So the next topic is Bagh print. This topic is important for your art and culture section. So Madhya Pradesh Tourism Board, in association with District Administration Dhar, has recently launched a training camp on manufacturing of sustainable bags based on Bagh print. So this particular craft derives its name from the river Baghini, and it was started actually by the community of Muslim Khatris in 1962 when they migrated from Manawar to Bagh. So weaving and hand block printing process with geometric designs is generally made through this particular art form, and in this technique cloth is used. Cloth that is used is cotton and silk, and the dye that is created is used from natural sources which are eco-friendly and non-hazardous. Okay. So the next topic is Commando Battalion for Resolute Action. This topic is important for your security section. So CRPF is considering a change in the training pattern of elite anti-Naxal unit, Cobra. So Cobra was raised for guerrilla or jungle warfare type operations, and personnel for Cobra are selected from CRPF. They undergo rigorous commando and jungle warfare training, and about 10 Cobra units were raised between 2008 and 2011. So what is CRPF? CRPF is the premier central police force in the country, which is under the functioning of Ministry of Home Affairs, and it was actually constituted as a crown representative police in 1939 to help vast majority of native states to preserve law and order as part of their imperial policy. But after independence, it was raised as a separate force, or separate central paramilitary force as per the CRPF Act provisions of 1949. So the next topic is Mission on Advanced and High Impact Research. This topic is important for your governance section. Recently, Ministry of Power and Ministry of New and Renewable Energy have jointly launched a national mission on advanced and high impact research. So this will quickly identify emerging technologies in the power sector and develop them indigenously, both within and outside India. So this program or this mission will be funded by pooling the financial resources of these two ministries and their respective central public sector enterprises. So
This mission is being planned for an initial period of 5 years, and this will have a two-tier structure for monitoring: a technical scoping committee, which will be chaired by the chairperson of Central Electricity Authority, and an apex committee, which will be chaired by the Union Minister for Power and New and Renewable Energy. So what are the areas for research which have been identified as of now? Lithium ion storage batteries, green hydrogen, electric cookers, fuel cell, carbon capturing, etc. Okay. So the next topic is food safety index. This topic is important for your governance section. Recently, Union Health Minister has released 5th State Food Safety Index in New Delhi, and it's an annual assessment which is released by the Food Safety and Standards Authority of India. It was started in 2018-19 period, and it is based on the performance of states and UTs on 5 significant parameters like human resources and institutional data, compliance, food testing, training and capacity building, consumer empowerment, etc. And it is a dynamic quantitative and qualitative benchmark. It has become rather a dynamic quantitative and qualitative benchmarking model which provides an objective framework for evaluating food safety across the states and UTs. So as per this recent index, among the large states category, Kerala has been the top ranking state. Among the small states category, Goa has been that state, and among UTs, Jammu Kashmir, Chandigarh, and Delhi have been the top performers. Okay, so these were our topics for today. Please also download the weekly current affairs compilation from our Telegram group today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.